Welcome back, ladies and gentlemen. Thank you very much for staying with us over the last 5.5 hours. We've got still some more time to go, but the energy levels are not dropping because the mission is such. ये जिम्मेदारी हमें मिलकर लेनी है और इस सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अक्षय कुमार, हमारे कैंपेन एम्बेसडर, हमेशा की तरह हमारे साथ हैं. Saurabh Jain of Reckitt is with us, and we will have many others joining us. Zaka is, of course, with me right here, right next to me, my good friend, and let's say good evening and welcome onto stage actor, mother, and of course a champion for all causes, Neha Dhupia. Please come on stage. Sat Shri Akal ji. Sat Shri Akal ji. How are you? Hi Neha. Hi. So good to have you with us. Thank you. Hi. How are you? Great. My God, this is a very strategic position. Firstly, standing between all these wise men. There's a huge expectation out of me to say wise things. Okay, so now are we ready for it? After you, sir. After me? All right, I'm seeing you after so long. I know. You're looking beautiful. Thank you. Thank you very much. So, मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि we are here on a mission mode, and the idea is, and this time as we take this whole cause forward, you've joined us in the past. We've talked about Swachhta, we've talked about the need to save Paani. But I want to ask you, what is the real challenge that you have faced? You are now an influencer. You are talking to people. You're traveling. Have you faced, as a woman, really on ground, what's the challenge that you've faced, and what do you think needs to change? Firstly, on a lighter note, I think the biggest challenge I've faced is that you've called me an influencer, because what influencers do is so hard. So to always make that messaging right in those 59 seconds is hard. But coming to the most serious topic over here, which is water. Of course, you know, if you're talking to me as a woman, a mother, an actor who's been on the road, I would imagine that I have to answer this question by splitting it into 3 equal halves. Good. And, you know, let's just backtrack. I think the time that I spent on the road has been one where, you know, you're always like, acha, abhi nikalna hai, kahin jana hai, so like, you know, let's just make sure that what if you don't have the right kind of toilet, the right kind of facility, where can you go? And as a woman, it's much harder. I just feel like, you know, do men really think of these things? They don't, because the facilities, I feel, are lacking in some way. More than that, I feel even if one has the facility, it's also the kind of facility there is. And I feel like we're a large part of not making it really comfortable. Because the minute we hear, okay, it's public or the toilet is public, we don't treat it like our own. So that's why it becomes even more uncomfortable for us to use it. I've been on the road. I've done a couple of, you know, shows where I've had to be on the road for almost like 60 days at a stretch. And you're like, okay, you also, I don't know if it's an experience, but for me it's brief because we wake up, we go to the toilet, we have a home, but I've also experienced that. And I think it's much harder for women who have to go through this every day of their lives to be able to do this. My shoots have permitted me to do that, but I genuinely think the lack of facility is something that we need to talk about, we need to harp upon, we need to highlight, we need to underline every day of our lives, and what you guys are doing is amazing. I want to talk to you a little bit about, because you've said this in your social media work as well, about mothers who are coming back to work. One of the things we don't talk about enough is, you know, kids-friendly toilets where you can change diapers, feed them sometimes. I mean, long ways to go before we get there. Oh my God, I'm so glad that you're talking about this, because, you know, I mean, of course, it's been very long since I've spoken to Akshay also at length, but, you know, there are multiple things that one does, and after becoming a mom, I started a breastfeeding community called Freedom to Feed. Of course, it started as one voice, and we have almost 50,000 women who tell us every day as to what they're going through. So, जो सबसे बड़ी जानकारी, शिकायत या फिर you know, जिसे कहते हैं कि ज़रूरत या असुविधा जिसकी बात करते हैं ना, वो बोलते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास टॉयलेट नहीं, we don't have a safe space for our child. And I think as a mother, you don't need anything else. You're just like, is my child okay? मतलब पहला आखिरी जो आपके दिमाग में जो प्रश्न जो होता है, is my child okay at all times? And I feel like there's such a shortage of facilities even there. I mean, हमारे आसपास हैं, but what happens when you go deeper into
the country, what happens when you travel, what happens when you make larger plans. You're just stuck with that that bag. No, but facilities हैं लेकिन है ना लोग ध्यान नहीं रखते हैं. That is एक बहुत ही बेकार सी चीज़ है. मैंने देखा कई जगहों पे फैसिलिटीज़ होती हैं लेकिन अंदर जाके देखो तो उन्होंने ध्यान नहीं रखा होता, इस्तेमाल बराबर नहीं करते हैं, गंदा होता है, ख़राब होता है, मतलब कई जगहों तो कीचड़ होता है, सब कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं. फैसिलिटीज़ सरकार ने बना के दी हुई हैं लेकिन उसका जो ध्यान रखना है, उसको अपनापन जो देना है, उसको ये सोचना है कि ये हमारा खुद का, वो नहीं रहता. जी बिल्कुल. एंड व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट. वही तो बात हो जाती है. द मिनट यू थिंक इज पब्लिक ना, तो हम सोचते हैं कि किसी और का काम है साफ रखना. देयर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर नाउ एंड ओवर टाइम यू आल्सो मस्ट हैव नोटिस्ड, अक्षय, यू बीन ऑन द रोड फॉर सो लॉन्ग एंड शूटिंग एंड यू मस्ट हैव सीन कि मतलब इवन एज सिंपल एज इफ यू लुक बैक 15 years ago or 10 years ago, जब हम मुंबई से पूना भी जाते थे ना शूट करने, 3-3.5 घंटे की वो जो ड्राइव होती है, तो हम सोचते थे यहाँ पे बाथरूम चले जाते हैं, फिर सीधा हमको होटल मिल जाएगा. नाउ यू कैन स्टॉप लिटरली एवरीवेयर, बट बिकॉज देयर आर फैसिलिटीज, बट एवरीवेयर इज ऑलवेज दैट क्वेश्चन योर हेड, यहाँ चले जाएं, इज इट क्लीन, साफ होगा नहीं. एग्जैक्टली टेकिंग योर पॉइंट फॉरवर्ड. आई फील देयर आर फैसिलिटीज बट हाउ वी लीव इट इज अपॉन अस. सी दिस इज ऑल, दिस थिंग इज अबाउट एटिकेट. आपको क्या लगता है कैसा एटिकेट, मतलब क्या लोगों को सीखना चाहिए इस एटिकेट के ऊपर? आई थिंक जस्ट टू मेक श्योर, मतलब बहुत साल पहले, आई डोंट नो हु डिड द वाज इट, आई थिंक इट वाज अ गवर्नमेंट रन इनिशिएटिव की एक एड आती थी कि जब वो कचरा बाहर फेंक रहे हैं और वो हमेशा बोलते थे कि ये जो बाहर है वो भी आपका घर है, सो मेक श्योर दैट यू कीप द आउटसाइड आल्सो क्लीन. एंड देन एवरीबडी स्टार्ट मेकिंग श्योर दैट नोबडी वाज लिटरिंग ऑन द रोड. सो It's literally that, right? You know, you have to make sure. So you're talking about, work on toilets. We now have joining us from all the way from Nigeria, a gentleman whose work on toilets, in fact, led to the WTO coining the World Toilet Summit. And of course, one of his goals became an SDG. Jackson, thank you so much for joining us here on Mission Swachhta or Paani. First things first, tell us about how your nature of work itself has changed over the last 10-15 years, and how the UN, no less, is now putting emphasis on toilets, cleanliness of toilets, and on sanitation and on hygiene. Just walk us through it briefly. Nigeria is very enthusiastic in solving its sanitation crisis. About half of their population are still openly defecating, and the Nigeria Minister of Water Resources is a champion for Clean India campaign led by the President of Nigeria. So we are getting top-level support in this World Toilet Summit at the Transcorp Hilton Hotel. All the ministers involved, like water resources, health, environment, education, they are all coming. And also the Deputy Secretary General of the United Nations will be coming together with the President of Nigeria. So it is a very high-level, powerful meeting, very similar to Swachh Bharat, where Prime Minister Modi led the Clean India mission. I think this is going to be African Swachh Bharat. Yes. Jackson ji, please stay on with us. We also have Dr. Bindeshwar Pathak, a person who needs no introduction. He is the one who championed this mass movement that is Sulabh International. Bindeshwar ji, namaste. मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा, आज हम समानता और पहुँच की बात करते हैं. हमारे देश में बहुत से लोगों को आज भी स्वच्छ और साफ सुथरे टॉयलेट्स उपलब्ध नहीं हो पाते. आपके हिसाब से ये समस्या कहाँ है और क्या है? I also gave the concept of the provision of public toilets, bath, urinals, wash machine, soap powder to wash hands, and attendant round the clock. That is the success of Sulabh. Because if there is no attendance, then everybody will be taken away by the people. Not the general people, but... So the question is, I gave this concept. Earlier, there was no public toilet near railway station, bus stand,
marketplace, religious and tourist places. So I also started providing public toilets also. जी. And you see the first, the two-pit toilet, Bangladesh, Vietnam, and Government of India by the order of the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. So, these three countries have provisions of household toilets. Now India is free from defecation in the open. पाठक जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बिहेवियरल चेंज के बारे में हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। टॉयलेट्स कैसे यूज़ करना है, अगले यूजर्स के लिए इसे कैसे क्लीन रखना है, डिसेबिलिटीज़ वाले और बीमार लोगों के लिए टॉयलेट्स कैसे मेंटेन रखना है, या अदर जेंडर्स की सैनिटेशन को लेकर क्या अधिकार है, हम कैसे लोगों में ये बिहेवियरल शिफ्ट ला सकते हैं? एक नेशनल डायलॉग इसको कैसे बना सकते हैं हम? Actually, everybody had to be careful. Earlier, people had no habit of keeping the place clean, but now, because of the Prime Minister's initiative, people are keeping the place clean where they live. Yeah. And they do not make themselves dirty. And if somebody does, they always say, no, don't do it like this. So this is happening. And you asked about the behavioral change, the attitude of the people. So I told you what was the position earlier. So it took time. And now just see, it's 6,000 years, both the practices continued, and then there was no alternative. So alternative I started giving way back in 73, 74, 1973, 74. And after 55 years, what you see, by our efforts and by the efforts of Government of India, every house has a toilet. So question is about the behavioral change of the use. जी बिंदेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सही बात कही आपने कि समय लगता है। कभी कभार 3 पीढ़ियां, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी कहते थे कि 3 पीढ़ियां लगती हैं आदत बदलने में, सही तरीके से या गलत तरीके से। हमें एक पीढ़ी में बदलने की कोशिश करनी है। नाउ लुक एट द वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज दैट स्टार्टेड एज अ सोशल एंटरप्राइज इन 2005 विद द बिलीफ टू इंश्योर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड्स इन टॉयलेट डिजाइन, क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन टेक्नोलॉजीज। In India, sanitation workers have historically acute social marginalization and discrimination. For sanitation standards to improve, this injustice has to be addressed first. So, Harpic, with the World Toilet Organization, a global non-profit, started the World Toilet College movement in India in 2018 to eliminate the inhuman practice of manual scavenging and improve the status of sanitation workers with dignified livelihood options. In association with the Global Interfaith WASH Alliance, Harpic set up the first toilet college in Rishikesh in 2018. Then it started its Central World Toilet College in Aurangabad in association with the non-profit Jagran Pahal. There has been no looking back. Maharashtra, Uttarakhand, Punjab, Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh. The network expanded to 5 more states. And now it is expanding its reach to 8 more states and 1 union territory, which means footprints in 50% states of the country. Today, Harpic World Toilet Colleges provide sanitation workers training in mechanized systems. The teachers also train them to form self-help groups and become entrepreneurs in the space of civic sanitation. Harpic's sustained empowerment of frontline sanitation workers is truly a revolution in the making.
The World Toilet College has become a social movement now. Let's have a round of applause for this incredible effort. It's a joint effort by Jagran Pahel and Reckitt. And I want to bring in Sahil Talwar, who's the director of Jagran Pahel, to come up on stage to give us a sense of where this idea germinated from and what the road ahead is. Welcome. First of all, incredible work that you're doing, Sahil. Tell us a little bit now about the WTC movement. Like I said, it's become a social movement of sorts. On the one hand, you are wanting to raise the esteem of our sanitation workers, and yet at the same time, what we see is they are still treated as one of the most marginalized folks in our society. So how do you work out this contradiction? So actually, in 2018, we started the Harpic World Toilet College. Keeping in mind that while the entire focus is on, the Swachh Bharat mission and the entire movement was at its peak, there needs to be some sort of attention which needs to be given to the sanitation workers, which are entirely the backbone of the sanitation infrastructure. Keeping this in mind, we started this journey, and the entire Harpic World Toilet College revolves around providing dignity to sanitation workers. Although the sanitation workers are not entirely recognized in terms of if you talk about the data or anything else, but still at the same time, we have been able to do a mapping of the state, the city, along with the municipal corporation workers, and we have been able to reach out to their communities, reach out to the community leaders, and actually been able to build the confidence in them and onboard them, register them at our centers. And so far we have trained more than 25,000 sanitation workers in the past 3 years, and hopefully we'll train another 15,000 workers at the end of the next financial year, with more than almost 15 Harpic World Toilet colleges opened up all throughout the country. Wow, fantastic. साहिल, आप वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के जरिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज का कॉन्सेप्ट क्या है. व्हाट इज इट अबाउट? कैसे आपके दिमाग में ये आया कि ऐसा भी कॉलेज होना चाहिए कि टॉयलेट के ऊपर भी मतलब लोगों को पता होना चाहिए इसके एटिकेट्स के बारे में, इसके क्लीनलीनेस के बारे में. ये आपके दिमाग में आया कैसे? Actually, sir, when we talk about sanitation workers and when we talk about the World Toilet College, it is something that was unheard of entirely. Not many people were talking about the sanitation workers. We thought that there needs to be, there's a dire need to address the situation of the sanitation workers in the country. When we went out to the government, to the municipal corporations, we were hardly able to find anything relevant by which we could actually capture the data or where the sanitation workers are residing, what communities they are from. We slowly found out that either it's a generational thing which they are doing, or it is something that they have been, that they are bound to do because to make up for the daily wages. So keeping this in mind, we thought that it's absolutely necessary that there needs to be a curriculum which is specifically designed for the sanitation workers. There needs to be a training module which is certified by Harpic and by our expert trainers who actually provide them with training curriculum focusing on the soft skills component, their rights and entitlements, any other components which help them create the awareness, and by the end of it, we also support them with their health checkup. So it's an overall 365-degree approach that we use that focuses on providing dignity and employment opportunity to the sanitation. I must say, even I came to know a few days back only about it, and I didn't know about this. I think you are doing a brilliant job. Brilliant is not the word. Thank you, sir. वैसे ऐसे कितने कॉलेज है, आप बता सकते हैं कितने कॉलेज है और कितने स्टूडेंट्स वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं? आप किस तरह से वहाँ सैनिटेशन की ट्रेनिंग देते हैं? कौन से प्रोग्राम हैं जिनकी ट्रेनिंग वहाँ दी जाती है? मतलब if you can just elaborate. I know we saw the whole thing, but we would like to know from you. How many colleges are there? So there are around 15. There are a total of 15 colleges. 15 colleges. In the country. Are you planning to open more and more everywhere? So we have worked on the capex. Now we want to refine our curriculum. We want to focus on refining our curriculum, and
involving more and more sanitation workers in the 15 centers where we are located right now. So that is because by itself, managing 15 centers by a single organization in partnership with Reckitt, with our implementation partner support, is something that we think we should do justice to. So when the college is on, like it literally is for 8 hours or kitne ghante? Absolutely, sir. It's a 5-day curriculum, and it's a 5-day curriculum. Okay. And in 5 दिन के लिए रोज sanitation workers को बुलाया जाता है. Okay. And उनको training दी जाती है. By the end of the training, उनको एक health checkup करा जाता है. उसके साथ उनको एक dignity kit provide करी जाती है, जिसमें एक water bottle, bag, safety jacket, other safety gear like gloves and all are provided to them. Okay. And by the end of it, we have 700 plus recruitment partners who are onboarded with us. So we ensure more than a 99% placement opportunity to the sanitation workers. So the idea is that ये लोग हमारे साथ training करके एक alternative organized sector में livelihood option ले सकें. You will be meeting some people who are part of our work. तो मैं बताता हूँ साहिल के साथ आज वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स भी आए हैं. आइए उनसे मिलते हैं, वो क्या कहते हैं. आज हमारे साथ हैं माया और मुकेश. माया और मुकेश आइए. मैं आपको बताऊं माया के बारे में. माया जी ने अनऑर्गेनाइज सैनिटेशन सेक्टर में सालों तक काम किया, जिसमें उन्हें बहुत काम पैसे मिलते थे. तब माया ने एक बेहतर नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन पढ़ाई की कमी उन्हें पीछे खींचती रही. उस समय पर उन्हें पता चला औरंगाबाद के वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के बारे में, जिसने पूरी कहानी ही इनकी बदल डाली. और मेरे साथ है दूसरी तरफ मुकेश, जो अपने हालातों की वजह से खुद को पढ़ा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने एजुकेटर बनकर वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज मूवमेंट से के उनके जरिए सैनिटेशन वर्कर्स को ट्रेन किया. इन्होंने उन्हें इज्जतदार जिंदगी जीने का मौका दिया. आज वो एक कंपनी में सुपरवाइजर है. एम आई राइट? सुपरवाइजर हैं और अपने संघर्ष से भरी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं. तो चलिए इनसे मिलकर बात करते हैं कि ये दोनों क्या कहना चाहते हैं. माया जी, सबसे पहले आप बताइए कि अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स के बारे में हम बताइए कि क्या आप बता सकते हैं, क्या 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 हुआ, क्या था आपके साथ आपकी लाइफ में. आइए, इधर आइए, बीच में आइए. आइए, बताइए. मुझे 3 लड़की है. 3 लड़की है. हस्बैंड मेरे चले गए. जोर से बोलिएगा. मुझे 3 लड़की हैं और मेरे हस्बैंड चले गए, तो मैं तीनों लड़की को लेके साथ में रहती थी भाड़े से रूम से. तो ऐसा ही काम करती थी मैं, थोड़ा सा ऐसा साफ सफाई का काम करती थी. 3,000-4,000 पेमेंट मिलता था. तो अभी क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता था. अभी 3,000-4,000 में कैसा घर चलेगा, कैसा होगा. तो फिर सर जी आए, मुझे ट्रेनिंग दी. 5 दिन की ट्रेनिंग दी मुझे. और मतलब आप कॉलेज में गए ट्रेनिंग के लिए? नहीं, सर जी आए थे. सर जी आए थे हमारी एरिया में, स्लम एरिया में आए थे. ओके. हाँ, फिर हमें ट्रेनिंग दी और बताया 5 दिन में क्या कैसा काम तो करने उस 5 दिन के अंदर आपने क्या क्या सीखा? अगर 2-3 चीजें आप बता सकती हैं. मतलब साफ सफाई कैसा करनी है, क्या करनी है, तुमको काम कैसा करना है, ये सब सीखा है मुझे. और ग्लोव्स पहनने का, ग्लव्स पहनने का. हाँ, और हार्पिक का इस्तेमाल करने का साफ सफाई करते टाइम मुझे बैग दिया गया. और उसमें बहुत सारे सामान थे, चीज थे उसमें, ये कैसा यूज करने का है सब मुझे बताया उन लोगों ने. फिर मुझे सर्टिफिकेट भी दिया. और सर्टिफिकेट देने के बाद पूरे मैं बोले सर मुझे काम मिलेगा. बोले हाँ आपको काम मिल जाएगा. तो फिर उसके 10-12 दिन में सर जी ने मेरे को कॉल किया और बताया कि आपका काम हो गया. अभी मुझे 12,000 सैलरी मिल रही है. 12,000 सैलरी मिलती है आपको? हाँ, 8 घंटे का काम है और बहुत अच्छा, एकदम मेरी फैमिली एकदम अच्छे से ठीक हो गई. अच्छा, चलिए मुकेश जी, आपने किस तरह से अपनी लाइफ में यहां तक का सफर तय किया? अपने स्ट्रगल के बारे में अगर वो कुछ बताना चाहेंगे. मेरी शुरुआत, थैंक यू सर. हाँ, मेरी शुरुआत, लाइफ की जो शुरुआत थी मेरे काम की, मतलब मैं 10वीं फेल हुआ. और उसके बाद में तो 10वीं फेल में क्या परिस्थिति बहुत गंभीर थी. तो क्या करेंगे, हमारे स्लम एरिया है, झोपड़पट्टी है, और वहाँ पे मतलब टॉयलेट नहीं थी. इतनी गंदगी
हमारे दरवाजे पे करते थे, आप अपने दरवाजे पे लोग टॉयलेट करते थे। अभी जिस तरह से सर जी ने कहा कि तुम शर्मा मत बच्चों को, तो मैं भी नहीं शर्मा था। वहां पे शौच करके एक दूसरे के घर पे फेंकते थे, क्योंकि बारिश में जंगल है बाजू में, वहां जा नहीं सकते, तो एक दूसरे के घर पे फेंकते थे शौच करके। बाद में बारिश नजदीक आई तो झोपड़पट्टी में क्या होता है, वो प्लास्टिक चेंज करना पड़ता है। तो जब प्लास्टिक चेंज करते थे हम लोग आजू बाजू के, आपने अपने घर के, तो उसमें बहुत सारा शौच मिलता था घर के ऊपर, कीड़े घर में गिरते थे। तो ये मैंने देखा कि ये कितना भयानक परिस्थिति। हम क्या अभी मैंने सोचा कि हम खाना खाते तो उसमें भी गिरता होगा वो कीड़े सब। नहीं, बिल्कुल सही है। मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली मैं नाम नहीं लेना चाहता। आई यूज्ड टू स्विम व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। मैं जहाँ स्विमिंग सीखने जाता था, तो बाद में जब एक दिन उस स्विमिंग पूल की सफाई हुई थी, दे एक्चुअली फाउंड इन दैट स्विमिंग पूल एट लीस्ट अबाउट 30 to 35 kgs of shit. Oh my God. And it was a deep pool, nobody knew about it. But ये मतलब there is no sense, there is no etiquette, there is nothing, there is nobody to control them. Sorry, Akshay, I'm just going to take it from here for 1 second, because people need to understand कि ये जो problem है बहुत बड़ी है और solution बहुत ही छोटी सी है, which is this what we're talking about. And जैसे आपने कहा कि 30-35 किलो का, people have just passed whatever they wanted to, and waste has come out, human waste has come out, and it's just, and इनकी भी बातें. I wonder how much urine must be there. But that. That is. I know that. I mean, in swimming pool, people don't realize that. They will not come out of the swimming pool and go outside and go for the whatever they want to do, what business they want to do, but they would just do it in the pool. और जैसे ये कह रहे हैं कि खाने तक में आ जाता है, I mean, इनकी तो घर पे आप छत झुग्गी में आप टारपुलिन लगाते हैं, वो कह रहे हैं कि टारपुलिन के ऊपर उन्होंने शीट चेंज करने गए तो उनको पॉटी मिला है। और क्या आप कैसे होता है ये सब? इट्स जस्ट बताइए सर, आगे हमें बताइए कि हमारी आंखें खुल रही हैं, दिमाग खुल रहा है, यहाँ पे सुन के हम हैरान हो रहे हैं। तो फिर हमने सोचा सर जी कि अभी 10वीं तो फेल हुए, तो हमें कुछ तो भी इस विभाग के लिए करेंगे। हम छोटा मोटा हम काम करते थे, उम्र 17 है, कहीं नौकरी भी नहीं मिलती थी। बाद में एसएसपी मुंबई महानगर पालिका का एक प्रोजेक्ट आया, एसएसपी स्लम सैनिटेशन प्रोग्राम। तो किसी ने हमें बताया, इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन जो वहाँ के लोग थे वो एसएसपी के स्लम सैनिटेशन प्रोग्राम के वो से सोचा था कार्यक्रम अंतर्गत जो टॉयलेट बनाने वाले थे, मैं और 2-4 दोस्त लोग हम गए वहाँ पे, उनको बताया कि सर हम आपको जगह देंगे, हमारे आप शौचालय बनाइए। क्योंकि अभी उस समय 1 महीना होके एक औरत को सांप ने काटा था, जंगल में टॉयलेट को गई थी हमारे बाजू वाली। बोलो सर ऐसी परेशानी है, तो उन्होंने देखा फिर एनओ से भी सब निकालना पड़ता है गवर्नमेंट का। मैं बोला सर एनओसी का ये देखो अब बाद में करो, लेकिन यहाँ पे टॉयलेट हमें बनाओ। बाजू कॉर्पोरेटर थे, उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया, और महानगर पालिका ने वहाँ पे एक डबल टॉयलेट बना, डबल माले का, और उसमें नीचे लेडीज का था, ऊपर जेंट्स का था। तो हमने वो महानगर पालिका फिर बोले कि तुम एक संस्था बनेगी, उसको आप संभालो। तो बाद में वो टॉयलेट को ये बोलता है मैं नहीं कह रहा, क्योंकि टॉयलेट साफ करना लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं आगे होगा। हम बोले हम संभालेंगे उसको, उसमें लाइट लगाई, मीटर लगाया, पानी का कनेक्शन लिया, और प्रत्येक घर से हम सिर्फ महीने का उस टाइम 10 रुपये लेते थे। 10 रुपया, 10 रुपये में तुम घर में 10 लोग हो, 15 हो, सब जन आके यूज करो, लेकिन महीने में 10 रुपये दो, उसका हम क्या करेंगे, मेंटेनेंस रखेंगे। और बाद में वो टॉयलेट अच्छी तरह से लोग यूज करने लगे। उसके माध्यम से फिर हमने लोगों में जागरूकता लाई। हमारे नगर में 7वीं से आगे कोई पढ़ता नहीं था, क्योंकि बीएमसी का स्कूल 7वीं तक था, 7वीं आगे कोई पढ़ता नहीं था। तो बाद में हम कार्यक्रम लेना चालू किया। वो जो शौचालय था वो हमारे लिए शौचालय नहीं था, हमारे लिए मंत्रालय था। मुकेश जी, आपके एक साथी भी आए हैं, बनारस से आए हैं। लेट मी वेलकम ऑन स्टेज करण कुमार। ही इज ऑल्सो एन एलुमनाई ऑफ द हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज। ही इज कम ऑल द वे फ्रॉम बनारस। ही वाज जस्ट 21 years old। आइए आराम से, आराम से। क्या होता है अक्सर, ऑल ऑफ अस नो, सैनिटेशन वर्कर्स के खिलाफ भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप सिर्फ 21 साल के थे और आपको अनफॉर्चुनेटली शराब का सहारा लेना पड़ा, लेकिन वो सब छोड़ दिया आपने। अभी पूरा साफ है, क्लीन है। आपके जिंदगी में ये बदलाव कैसे आया, बताइए। सीधे कर बोल, लेकिन जोर से बोल। ये बदलाव कैसे आया आपकी जिंदगी में? सर हार्पिक टॉयलेट कॉलेज से मैंने ट्रेनिंग लिया जी,
उसके बाद मेरे पास 5 दिन का ट्रेनिंग हुआ मेरे साथ, उससे सुधार बहुत आ गया। बताया सर जी ने कि ऐसे ऐसे करो। शराब का मैंने नशा करता था पहले, गांजा जा पीता था, सिगरेट पीता था, 5-6 हज़ार कमाता था महीने का, नौकरी भी नहीं थी, भाई बहन भी छोटे छोटे घर में है, उन लोग के बारे में नहीं सोचता था मैं। मगर इसमें जब गए हम, पता चला कि यहाँ पे कॉलेज खुला हुआ है, एडमिशन कराया, गए, सर जी ने समझाया, 5 दिन का ट्रेनिंग हुआ हमारा, उसका समझाया ऐसे ऐसे कैसे कूड़ा उठाया था, कैसे हाउस सेक्शन में हमको नौकरी दिलाएं, नगर निगम में हाउस सेक्शन पर नौकरी दिलाएं। बताया गया 5 दिन में कैसे कूड़ा उठाया जाता है, कैसे सीवर में घुसा जाता है, अपने सेफ के लिए कैसे रखा जाता है, खुद के लिए हाथ ग्लव्स पहन के काम करने। पहले तो हम ग्लव्स नहीं पहनते थे, ऐसे ही काम करते थे, कूड़ा उठाते थे, धस जाता, हाथ कट जाता था, पैर में सीवर में घुसते, जल भी जाता था कभी कभी। हाँ, सीवर में घुसते थे, पैर में लग जाता था, पता नहीं था हमको, चप्पल ही पहन कर। मगर ट्रेनिंग लेने के बाद हमको बताया गया ग्लव्स पहनिए, मास्क पहनिए, जरूरी है, जूता पहने का, कम्बूट का जो होता है उसका जरूरी है, पहनो उसको। फिर कैसे उठाया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, हार्पिक का यूज कैसे किया जाता है, ब्रश का कैसे यूज किया जाता है, कितना पानी यूज किया जाता है, सब हमको बताया गया सर। सब बताया। लेकिन जब ये वही सर थे, ये सर साहिल आपकी टीम में से सारे सर हैं? संजय सर थे। हाँ, संजय इज आल्सो हियर। हाँ, तो कैसे करते हैं आप ये 5 दिन की ट्रेनिंग when cases like Karan come to you? तो हमारी जो 5 दिन की ट्रेनिंग है, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग। इट स्टार्ट्स विद टॉकिंग अबाउट द हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज, हु वी आर, व्हाट वी आर ऑल अबाउट, what the rights and entitlements of an individual is. You know, as a sanitation worker or as any human being, they are entitled to work in a non-hazardous environment. Right. They have the right to wear the gloves, demand for it from their employer. Apart from that, we talk about what exactly is, housekeeping all about. What are the soft skills that are around, doing a job in an organized sector. अगर ये एक जगह काम कर रहे हैं, what are the basic etiquettes that they can follow which can help them move up the ladder in their career. And ऐसा 5 दिन का हम एक करिकुलम हमने डिज़ाइन करा हुआ है जो स्पेसिफिकली सैनिटेशन वर्कर्स के लिए है. And at the end of the day 5 we provide all of our sanitation workers with a certificate. This certificate enables them to reach out to our recruiters as well as externally. So we are seeing they are being employed at municipal corporation offices, they are being employed at hospitals, the big cinema halls, and as I said अब तक कितने हो चुके हैं, कितने स्टूडेंट्स आपके यहाँ से निकल चुके हैं 15 कॉलेजों के? We have trained more than 25,000 sanitation. 25,000. Yes. 25,000 लोगों को आपने ट्रेनिंग दी है? Absolutely. लाइफ बदली है? Yes. जैसे एक बात बताइए, लाइफ बदली कि नहीं बदली? वो 5 बहुत बदल गई. बदल गया? बहुत बदल गया. सुधर गए हो? पतले दुबले थे, आप जिम ज्वाइन कर लिया सर. पहले कपड़ा पहनने का नहीं था सर, देखिए नौकरी पहन लिए, पी जाते थे. अब देखिए कपड़ा अच्छा खरीद लेता खुद के. चलिए एक और कहानी आपको सुनाते हैं और एक और व्यक्ति से आपको मिलवाते हैं. अमन कुमार कूड़ा इकट्ठा करने का काम किया करते थे. ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर था और कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी. उनके पास काम करने के लिए सेफ्टी गियर्स तक नहीं थे. आज पटियाला के वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में वो स्कूल सैनिटेशन वैन प्रोग्राम में ट्रेनी हैं और अपने जीवन को बदलने की दिशा में काम कर रहे हैं. आइए अमन जी, आइए इधर आइए. नमस्ते सर. नमस्ते सर. नमस्ते. नमस्ते, बताइए आपकी स्टोरी बताइए. सर पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज का और स्पेशल थैंक्स राशि सर, साहिल सर, वीरेंद्र जाखड़ सर और ग्रीन स्पर्श फाउंडेशन का कि उनकी वजह से मेरी ये जिंदगी यहाँ तक पहुँची. तो सर पहले मैं ये काम करता था कि हर गली में हर सड़क पे कबाड़ उठाना होता है और सर मेरी इतनी गंदी हालत हो जाती थी. सुबह से लेकर शाम तक मैं कबाड़ उठाता था सर. और जब कबाड़ी के पास वो बेचकर जो 100-150 रुपए बनते थे उससे मेरा घर चलता था सर. तो सर एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी कॉलोनी में राशि सर और वीरेंद्र जाखड़ सर एक प्रोजेक्ट मीटिंग के मामले में आए. तो किसी ने सर मेरे को बताया कि अमन तू इतने गंदे हाथ करके और इतनी गंदी हालत से तू घर पे आता है, तू तो खुद बीमार होगा तो हाँ आपकी फैमिली भी बीमार कर देगा तू. मेरा एक दोस्त था बाहर से था तो उसको थोड़ी सी नॉलेज थी क्योंकि वो ये काम नहीं करता था क्योंकि मेरी फैमिली में यही काम करते हैं सर. तो उसने बताया कि हाँ एक मीटिंग लगी हुई है, वहाँ पर ट्रेनिंग की मीटिंग दी जा रही है कि जो वर्कर होते हैं जैसे कि आप काम कर रहे हो
जैसे कि कचरा उठाते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और प्रॉपर सैनिटेशन के बारे में बताया जाता है। तो मेरे को सुनकर अच्छा लगा सर कि ट्रेनिंग भी देंगे तेरे को। उसने ऐसा बताया कि तेरी जिंदगी भी बदलेंगे। मैंने एक को देखा है और मैंने खुद देखा उनका ऑफिस पर। मैं एक दिन मैंने उसकी बात को इग्नोर करा सर। तो एक दिन क्या हुआ, हमारी कॉलोनी में राशि सर और वीरेंद्र जाखड़ सर एक ट्रेनिंग लेके आए, मीटिंग बैठाई। तो उस ट्रेनिंग में मैं भी गया सर। तो उस ट्रेनिंग में क्या हुआ सर, राशि सर ने और वीरेंद्र जाखड़ सर ने मेरे को प्रॉपर सैनिटेशन के बारे में बताया कि जिस तरीके से आप और ये सफाई कर्मचारी बहन भाई काम करते हैं, इस तरीके से आप भी बीमार हो सकते हो और खुद की फैमिली को भी बीमार कर सकते हो। तो उन्होंने अपने ऑफिस के बारे में मेरे को बताया कि पटियाला में एक ऑफिस है, उसमें एक सैनिटेशन प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और आपको एक किट भी मिलेगी, तो भी हमारे साथ में सर्टिफिकेट भी मिलता है। यस यस सर। तो मतलब पूरे बेसिकली आप पूरे अब खुश हैं? बहुत खुश हूँ सर। मैंने कभी फ्लाइट नहीं देखी थी, मुंबई भी नहीं देखा था। मेरे सपनों में आता था सर कि मुंबई भी कुछ होता है। सबसे बढ़िया तो मेरा ड्रीम था सर आपसे मिलने का, वो भी आज पूरा होगा। क्या बात है। तो इन सब ने अभी टॉयलेट ट्रेनिंग के और इनको टॉयलेट कॉलेज की बात की। लेट्स क्विकली गो अक्रॉस टू द भुवनेश्वर वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज एंड सी अ ट्रेनिंग सेशन लाइव। तो ओवर टू यू, बताइए कैसे होती है ये ट्रेनिंग। टेक अस थ्रू दैट। वी आर लाइव विद यू इन भुवनेश्वर। गो अहेड प्लीज। जी देखिए, हम अभी भुवनेश्वर के वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में हैं। वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं वहाँ पे बहुत सारे सफाई कर्मचारी मौजूद हैं। अभी वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है। उनको आज विश्व शौचालय दिवस के अवसर में उनको फेलिसिटेट भी किया जा रहा है। आप सीधा देख सकते हैं वहाँ पे वो ट्रेनिंग दिया जा रहा है। उनसे भी बात करेंगे, उनसे उनके मुंह में सुनेंगे उनका सफलता का कहानी। उनसे बात करके पूछेंगे कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। जी, आपका थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जब आप वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में ज्वाइन किया और उसके बाद आपके जीवन में कैसा बदलाव आया? नमस्ते, मेरा नाम विजय नायक है और बदला तो बहुत कुछ आया है मेरे जीवन में। जब पहले मेरे पास काम नहीं था तो मैं इधर उधर भटकता था, तो कोई काम नहीं था, परिवार कैसे चलेगा, तो मेरा बहुत परेशान होता। फिर जब मैं इस काम पे ज्वाइन हुआ था ना, एक सर है मुझे ऑफर दिया है कि इधर क्यों जा रहे, तो हमारा वर्ल्ड टॉयलेट का आके मेरे पास काम करो तो तुमको कुछ मिलेगा। जब आके इस काम किया ना, मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया गया और आज इतना हेल्प किया है उन लोग ने, जैसे हमारे परिवार और सुरक्षित है अभी तक। ठीक है, तो महीना में मेरा 12,000 मुझे मिलता है अभी। ठीक है ना। और जी है लोग ने जो थैंक्स बोलता है, जो वर्ल्ड टॉयलेट थी, जो पहले जब भटका था, मेरा बहुत परिश्रम था, मेरा अभी दूर हो गया। लोगों को क्या बताना चाहेंगे जो स्वच्छता के बारे में आज जो कैंपेन के क्या बताना चाहेंगे? लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? तो सजेस्ट करना चाहते हैं कि ये लोग जब पहले लोग तो जब इस काम हम पहले तो कर रहा था ना, लोग सोच रहे तो कचरा है, ये काम कचरा काम है। ठीक है ना। जब इस कचरा काम करता लोग मैं सोच रहा था ये कचरा तो बाहर फेंक देता है, तो लोग सोच रहे थे जितना गंदा होता है ना, गंदा वो लोग तो थोड़ा उस लोग को मैं थोड़ा माइंड थोड़ा कुछ लग रहा है कि हम लोग इस काम को अच्छा से कर रहे हैं अपना मर्जी से। जैसे ये हमारा काम है, ये हमारा फर्ज है। अगर हम लोग सारे लोग सोचेगा कि इस काम सब लोग करेगा, तो परिवार में, घर में, घर गली में और ऑफिस में तो सब संडे सर जैसे अच्छा रहेगा। ठीक है। सुन रहे थे कैसे था उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। अभी वहाँ पे ट्रेनिंग चल रहा है। हम जो मेडिकल ऑफिसर है वहाँ पे उनसे भी बातचीत करेंगे। यह नाम दीपक। सर, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, वो जो आज ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या उनको सजेस्ट कर रहे हैं, क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे आज जो विश्व शौचालय दिवस के अवसर में? आप क्या कहना चाहेंगे उनको? Me being a community health specialist, apart from being a medical officer, so I'll tell that people used to call them as manual scavengers. Like the words have been changed, especially during the corona time. It's not manual scavengers anymore. It's called as frontline workers. So these are the people who are always there at the front, without whom we wouldn't have fought the corona. And these are the people without whom we wouldn't have been at the community what we are today. And
appreciations to all of the sanitary workers and all the sanitary people who were there with us during the corona time and always there with us. And especially, like today we are celebrating this World Toilet Day. It's not a single day of observation. It's for our community, it's for our betterment. It's a daily, day-to-day routine which we all need to observe. All right. I think it's a fascinating thing that he just said, the frontline worker there. They are now called frontline workers, not manual scavengers. We'd like to now call on stage Sadhvi Bhagwati. She's the Secretary General of the Global Interfaith Wash Alliance, and also Reckitt's Ravi Bhatnagar back on stage, please. Namaste. Thank you for joining us. Come ma'am, come. जब हम भुवनेश्वर की बात कर रहे थे और वहाँ भुवनेश्वर की ओर गए तो अक्षय ने एक बहुत बड़ी बात कही और नेहा जी भी वही बात कर रही थी कि हम किस तरह से उन्हें पुकारते हैं और उनको एड्रेस करते हैं। वो सफाई कर्मचारी हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। ये दो टर्म्स ही हमें अब यूज करने की आवश्यकता। इसके आगे और कोई भी नाम, कोई भी एडजेक्टिव जो पहले हम यूज किया करते थे उस सबको आप कंट्रोल और डिलीट कर दीजिए। बस यहीं रुकिए। सफाई कर्मचारी हैं और ये अपने कर्मचारियों का नाम जानिए, उनको और उनके नाम से बुलाइए। रवि मेरी बात सुन, मतलब वो अलग अलग जो गलत नाम से बुलाते हैं वो गलत है। वो दैट इज एडजेक्टिव्स गलत है। उनके नाम से बुलाइए। नाम नहीं जानते तो वो सफाई कर्मचारी हैं या फिर फ्रंटलाइन वर्कर। भाई साहब बोल दीजिए। हाँ भाई साहब बोल दीजिए। हाँ दीदी। एक होता है क्योंकि अगर हम कचरे के साथ या टॉयलेट के साथ एसोसिएट करें ना, एक डिग्निटी जो हम खुद नहीं देते दूसरे लोगों को। एंड इट वाज अ रियली लवली पॉइंट एक्चुअली जब हम वीडियो देख रहे थे, अक्षय ब्रॉट इट अप and it's really important apart from the multiple mandates that we're talking about. I know that there is a very important 5-point mandate, but I feel like dignity and respect should definitely be one. Now, and there's a reason why Sadhvi ji is here. 15 राज्यों में हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज हैं जिनकी शुरुआत औरंगाबाद के सिर्फ एक ही कॉलेज से हुई थी। क्या वजह थी? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन कॉलेज की शुरुआत की और इनसे सैनिटेशन वर्कर्स की जिंदगी में कैसे बदलाव आया? How did it change? Starting the World Toilet College in Rishikesh, on the banks of Mother Ganga, it was revolutionary. Our Global Interfaith Wash Alliance is committed to bringing together leaders of faith, leaders of the different religions together for water, sanitation, and hygiene. And we've been working on what we call the grand level and the ground level. So the ground level is the level where we're bringing leaders together on these huge stages. The Kumbh Mela, the Convert Mela, our evening sacred Ganga Aarti, all of these major, in Kattas, major religious events to talk about ending open defecation when we were founded, and that was the main issue. Then around menstrual hygiene, around so many other issues now, mainly clean water. But also, we are working so much on the ground level. And on the ground level, we are actually constructing toilets, putting in hand washing stations, providing clean water, doing education in schools through a beautiful Water Schools program. And the World Toilet College that we had the beautiful blessing of starting with RB and our brother Ravi Bhatnagarji to really take this teaching and training onto the ground to bring sanitation workers together, not only from Uttarakhand. We actually brought in so many groups from other places. We had teams come in from Bihar to train them in how to personally take care of themselves, but also at that time, how to build toilets. And especially we've been focused on women, a Women for Wash program. We trained women to build the toilets, to be the masons, to be the Swachhta Krantakaris. So it's been really a fantastic opportunity. Ravi and Saurav, just a quick word before we take a break. Of course, this is Reckitt partnering with Jagran Pahel, with the Global Interfaith Wash Alliance. How did this idea originate, and what is the next level? You can split the questions between both of you. Right. From the origin perspective, I think we've been doing a lot of small activities across. We were talking about kids, we were talking about sanitation, behavior change.
then we also understood that there is an important need to also attack this problem from the supply side. Because जब तक ये available रहेंगे लोग, तो एक तो infrastructural improvement नहीं होगा, people will continue to build toilets that will create problem for others, and second कोई जिम्मेदारी खुद नहीं लेगा. The moment you make that change, and when people are forced to do their own job, this is the time when people will start taking action. So there was a need to attack the problem from the supply side, and that's where this thought came in. Also, 2013 when the prohibition of sanitary workers and rehabilitation. Ravi, I want you to continue, and I'm going to just come over and check if Saurav's mic is on. Just go Ravi, ahead. you want to take off from where he left? So, that's one part what Saurav was actually addressing, but the biggest, when we say the foundation, the first day of this program, that reminds me of the time when we were doing the life expectancy of the people in India. Which communities have the lowest life expectancy? So the first indicator we found was like the manual scavengers' life expectancy is less than 45 years. Wow. For male and for the female. One of the primary reason was like they go under the gutter, they clean it, there are acids, and many of them actually died inside the gutters only. From there, the first thing came out, we said like, why not to give them a dignified life? Why can't we improve their life expectancy? Second important thing was like, can we break this whole cycle of manual scavenging? Because a manual scavenger kid becomes a manual scavenger only. Correct. Third was basically like, when you do all these things, then what's happening to the food security and nutrition security? Because many of them were drawing very less personal disposable incomes. When I say less, it's in the range of around 4,000 to 5,000, and the family size is around 8 to 9. If I see the averages. So we thought like, we will put a system in place where in the morning the World Toilet College acts like a college. In the evening you have a fridge there which has fruits, which has vegetables, which has, then there is a newspaper, there are doctors, male and female, there are essential medicines which are available. Along with that there is a high-speed internet and the gadgets to work on. So in the morning, most of the World Toilet Colleges actually, they work as a World Toilet College, and in the evening they develop as a space for the kids of the manual scavengers or the sanitation workers to prepare for the exams, to study there. And I invite everyone, I invite India to see and witness some of the World Toilet Colleges. Absolutely. They're very transformational in nature. We have 3 IAS officers which these World Toilet Colleges have given. The kids of the manual scavengers, we never thought like there will be 3 kids who will be coming from these World Toilet Colleges, and now they are serving IAS. Wow, wow. Ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause? And there are around 30 plus guys from these 15 World Toilet Colleges which are not working in India, but they're in the Middle Eastern countries. Some of them have even gone to the Romania, Russia and other countries too. So that kitty is also increasing day by day. अच्छा, एक काम करेंगे रवि, मैं आपके पास आके एक बात कह रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. एक चीज आपको अब कंट्रोल और डिलीट करना है, बताइए क्या? किसके बारे में? मैनुअल स्कैवेंजर्स को कंट्रोल और डिलीट करना है. उसको हम रिप्लेस करेंगे फ्रंटलाइन वर्कर्स, सफाई कर्मचारी और स्वच्छता वॉरियर्स. बेसिकली स्वच्छता वॉरियर इज समथिंग बेसिकली व्हाट वी हैव टू यूज. बस हम सब एक साथ ही इसको अब कंट्रोल और डिलीट कर देते हैं. सरकार ने डिलीट कर रखा है. तो हम भी कर दें, हम भी हमारे लेक्सिकॉन से कर देते हैं. कोई मानता ही नहीं है. On that note, Ravi, Saurav, Sahil, Sadhviji, Neha, thank you so much for joining us. Ladies and gentlemen, we'll take a quick break, but the grand telethon of Mission Swachhta or Paani continues right here after a very short break. Don't go anywhere.